हाँ हाँ अस्तु। अधुना अस्य चर्चा सत्रस्य अस्य प्राक् शोध कार्यशालायाः द्वितीय सत्रे ये खलु समागताः सन्ति ते सन्ति संस्कृतस्य वरिष्ठ सेवकाः, उत्कल विश्वविद्यालयस्य संस्कृत विभागस्य अध्यक्षचराः, अनेक देशेषु संस्कृतस्य प्रचारयितारः, सर्वतंत्र स्वतंत्राः, न्यायादि शास्त्रेषु कृतभूरि परिश्रमाः, आशु कवयः, नानाविध शास्त्रस्य ये खलु लेखकाः सन्ति। अधुना फकीरमोहन विश्वविद्यालये कार्यरताः सन्ति आचार्याः सुभाष चंद्र दास महोदयाः। एते सुदूर बाली मध्ये इंडोनेशिया देशे संस्कृत भाषायाः प्रचारार्थं सन्नद्धाः आसन्। अधुना एतेषां सान्निध्यम् अस्माकं महाविद्यालयस्य कृते हितकरं स्यात् इति ईशस्य पार्श्वे मे प्रार्थना। अधुना आचार्याः अस्माकं महाविद्यालयस्थ ये खलु गवेषणारत छात्राः सन्ति तेषां कृते अनुसंधान विधि विषये स्वकीयानुभव विषये ते पाठयिष्यन्ति। अधुना निवेदयामि आचार्यान् सुभाष चंद्र दास महोदयान्। आचार्याः। परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। महदिदं प्रमोदं स्थानं यत् इदानीं सीताराम आदर संस्कृत महाविद्यालय पक्षतः आयोजितेऽस्मिन् कार्यक्रमे अहं नियुक्तोऽस्मि। अस्मिन् आभासी कार्यक्रम माध्यमेन मम अनुजाः तत्र भारप्राप्ताः तत्र अध्यक्षाः प्रोफेसर शशिभूषण मिश्र पादाः तत्र विराजन्ते। अन्ये च तेषाम् अन्ये तावत् सहकर्मिणः सन्ति। एतस्य कार्यक्रमस्य नियोजकाः, संयोजकाः, अधिकारी महोदयाः, पुनश्च छात्राः छात्राश्च इति अस्मिन् विषये गवेषणा प्रभृति विषये यत् आदिष्टम् एतस्य विषये तत्र किं वक्तव्यम् अस्ति। बहु तत्र कार्यक्रमाः एतादृशाः आयोज्यन्ते भिन्नेषु भिन्नेषु विद्यालयेषु, महाविद्यालयेषु, विश्वविद्यालयेषु च। अतः गवेषणा प्रभृति अनुसारं यत् आवश्यकं गवेषकाणां कृते यत् आवश्यकं तद् अनुसृत्य अद्य भाषणम् अद्य भविष्यति। यतोहि गवेषणा विषये पूर्वं तु मिश्र महोदयैः सम्यक्तया उक्तवन्तः इति अहं मन्ये। गवेषणायाः इदानीं प्रकारः अस्मिन् विषये मम अद्य विचाराः सन्ति। कीदृशाः विचाराः तावत् गवेषणा विषये तत्र भविष्यन्ति नाम के प्रकाराः, कति प्रकाराः तत्र सन्ति एव विषयाः। यदि विषयाः निर्दिष्टाः सन्ति तर्हि गवेषणायाः आवश्यकता अपि नास्ति। अतः गवेषणा इत्युक्तौ नवीनतया किमपि अस्माभिः कर्तव्यं, किमपि अस्माभिः स्वीकर्तव्यं विषय अनुरोधेन तत् स्वीकृत्य अन्वेषणीयं भवति। अतः नावीन्यं किं तस्मिन्नेव विचारः प्रकट्यते। नाम तत्र सरणी कीदृशी भविष्यति, अतः गतिः कथं तत्र प्रवर्तते। अतः गवेषणा प्रविधयः भिन्नाः भिन्नाः तत्र सन्ति एव। अतः टाइप्स ऑफ रिसर्च इति उच्यते। देयर आर टाइप्स ऑफ रिसर्च। टाइप्स ऑफ रिसर्च इत्युक्तौ तत्र प्रथमतया गवेषणायां या धारा अस्ति तस्मिन् वयं यदि प्रवर्तामहे तत्र एवं तत्र कर्तव्यम् अस्ति। प्रथमतया आदौ विचारः यतोहि किं कर्तव्यं, कस्मिन् विषये प्रवर्तितव्यं, मम गवेषणा किम् अधिकृत्य प्रवर्तितव्यं,
कम विषयम् अधिकृत्य कर्तव्यम्, अतः दिशा तत्र निर्देशः आदौ एव कर्तव्यः. So types of research, there can be many types of research. We know that types of research is maybe classical, maybe modern, maybe comparative, maybe scientific. So like this, there are many topics which can be analyzed and taken up through this kind of research. So a topic should be selected in the beginning, and that should be decided by the guide and with mm, you can say with the completion and also discussion of the finalization of the topic, then only you can go for the type of research. What type of topic it is, whether you have completed the review of literature, stock of the literature before your guide, whether you have discussed it before your guide and you have completed the topic. So that topic itself is dependent on the complete discussion with your guide. Guide must be consulted off and on frequently for the completion and selection of the topic. After selection of the topic, you can go through the topic proper and follow the types of research. So there can be various types of research. A student may be interested for any type of research while we apply the parameters. So we can have the parameters. It is the providing the link between past and present, and your link should be the thesis or dissertation or the topic of research when you are discussing with your guide and finalizing and completing. That means you should discuss frequently whether you are going to discuss it through a analytical method or comparative method or modern method or traditional method or historical method, etc., etc. So there can be many types of research, and this refers to our glory of Sanskrit literature. जैसे कि संस्कृत वाङ्मय में इतने सारे पुस्तकें हैं और इतने सारे पुस्तकों को हम समीक्षा करने के लिए, हमारा गवेषणा प्रविधि में अंतर्भुक्त करने के लिए हमको ये चाहिए. ये विषय को हम जब सिलेक्ट करेंगे और अपने गाइड के साथ, मार्गदर्शक के साथ बात करेंगे और उसको हम अपने गवेषणा के प्रविधि में शामिल करेंगे और उसको हम अपनाएंगे, तो इतने सारे बच्चे जो हैं जिसको जिनको चाहिए, तो एक सब्जेक्ट में, एक विषय में, एक धारा में तो सब प्रवृत्त होंगे, ऐसा तो कह नहीं सकते. वी कैन नॉट डिक्टेट that all the students should follow one type of research. We cannot assume that everybody should follow one method of research. So various methods are used and various types of research are prescribed in the methodology of Sanskrit research. So far, we are doing the Indology. So Indological research involves such kinds of methods and such kind of things. So first of all, the analytical study or analytical method when we take up, so the analysis has to be started from the problem itself. So problem, what is the problem? What is the selection of the topic and what is the problem you have undertaken for your research? That itself discusses about the informations you have collected for doing the research. Whether it goes to an analytical part, whether this is a topic of analytical study, you don't know. But there is a possibility that it involves some kind of interpretation, some kind of informations which requires examination analytically. So this analytically, the subject has to be taken up, and ultimately this analytical method refers to the analysis of the systematization of the organized representation of the informations. हम इंफॉर्मेशन ज्यादा इकट्ठा करेंगे रिसर्च के लिए,
जितना ज़्यादा हम लाइब्रेरी जाके और अपना विषय को चुन के हम उसको कलेक्ट करेंगे, डाटा कलेक्ट करेंगे, उसी डाटा को लेके हम एनालिसिस कर सकते हैं और जो हमको डाटा मिला है उसको हम लेके हम बार-बार उसको परीक्षण करेंगे और परीक्षण करके हम उसको निरीक्षण करने के बाद उसको हम इंटरप्रिटेटिव मेथड को जो हम जाएंगे, जो गवेषणा में शामिल होता है, उसमें हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने के पहले हम उसको कैसे ही एनालिटिकली वी कैन डिस्कस इट। सो फॉर एग्जांपल हम टॉपिक एक लेंगे कि जो एनालिटिकल हो सकता है, ऐसे भी हम टॉपिक एक ले सकते हैं जो कि एनालिटिकल स्टडी होता है। हम लेते हैं कि शब्द शक्ति विमर्शः एकम समीक्षात्मकम अध्ययनम। अतः शब्द शक्ति विमर्शः एकम समीक्षात्मकम अध्ययनम। शब्द शक्ति विमर्शः इत्युक्तौ व्याकरणशास्त्रे शब्द शक्ति विमर्शः अस्ति, न्यायशास्त्रे शब्द शक्ति विमर्शः अस्ति, साहित्यशास्त्रे अलङ्कारशास्त्रेपि शब्दशक्ति विमर्शः अस्ति। अतः कुत्र अहं तत् स्वीकरोमि, मम विषयः अन्तर्भुक्तः भवति। यदि एवं भूतः विषयः मया स्वीक्रियते, कश्चन स्वीक्रियते, तर्हि तत्र आदौ एव कर्तव्यं विषयस्य निर्धारणं। विषयस्य निर्धारणं कथं भवेत्? न्यायदृष्ट्या शब्दशक्तिविमर्शः एकं समीक्षात्मकम् अध्ययनम्, अथवा अलङ्कारदृष्ट्या अलङ्कारशास्त्रदृष्ट्या शब्दशक्तेः समीक्षात्मकम् अध्ययनम्, अथवा व्याकरणदृष्ट्या शब्दशक्तेः समीक्षात्मकम् अध्ययनम्। अत्र समीक्षात्मकम् अध्ययनं सर्वत्र अस्ति, परन्तु कुत्र समीक्षाणं कर्तव्यं? न्यायदृष्ट्या समीक्षणं कर्तव्यं, मीमांसादृष्ट्या समीक्षणं कर्तव्यम्, अलङ्कारदृष्ट्या समीक्षणं कर्तव्यम्, अथवा व्याकरणदृष्ट्या समीक्षणं कर्तव्यम् इति तत्र तावत् भेदः विषयेऽस्मिन्। If you select this topic of analytical studies, Shabda Shakti is a topic. This topic involves many problems. This is a very general topic. This general topic has many dimensions. These dimensions you can have to restrict because your time is limited for doing research. A researcher cannot do the research for unlimited period of time. अनंत काल तक हम ये कर नहीं सकते। गवेषणा तो निर्धारित समय तक होनी चाहिए। जैसे कि वैज्ञानिकों ने अभी चंद्रयान को भेजा है, तो उनको टाइम लेंथ था, इतने टाइम पर ये काम होना चाहिए। इसको अनंत काल तक अगर वो करेंगे, गवेषणा में लिप्त रहेंगे, तो चंद्रयान कभी भेजा नहीं जा सकता, कभी भी नहीं हो सकता। इसलिए वैज्ञानिकों के जैसे पद्धति है, इसी हिसाब से हमारे जो विज्ञान में जैसे होता है, हमारा इंडोलॉजिकल रिसर्च, संस्कृत में जो रिसर्च होती है, उसमें हम ऐसा उसको लेके कर सकते हैं। ऐसा कहना है कि हम समीक्षा करेंगे, किस विषय को समीक्षा करेंगे? अगर कई विषय सैद्धांतिक विषय है, जो सैद्धांतिक विषय को लेके हम उसको भाषण के माध्यम से, हम उसको पुनर्वाचन के माध्यम से, पुनर्निरीक्षण माध्यम से हम उसको हम कर सकते हैं। अर्थात हम किसी को लेक्चर जो पहले हुआ है उसी के ऊपर हम पहले उसको ढूंढ सकते हैं। अगर उनको मिलता है, रिकॉर्डिंग कहाँ से मिलता है, तो उनको भाषण को हम प्रवचन भाषण जो कुछ अगर कुछ उन्होंने किसी ने दिया है किस विषय पर, रामायण के अगर हो तो रामायण के ऊपर किसी ने कुछ कहा है, कि ऐसे गीता के ऊपर हो तो किसी ने कुछ पहले से कहा गया है, तो उनको सब रिकॉर्ड हम ढूंढेंगे और उसको कुछ रिकॉर्डिंग डाटा अगर मिलता है तो वो हमको साबित हो सकता है और हम उसको इसमें शामिल कर सकते हैं। वी हैव टू कलेक्ट द डाटा फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव फॉर एनालिटिकल स्टडी ऑफ रिसर्च। सो एनालिसिस करेंगे, अगर हमारा सही दिशा में हम संग्रह कर सकते हैं अगर ये डाटा को, तो हम उसको एनालिसिस कर सकते हैं, समीक्षा कर सकते हैं। अगर डाटा हमारे पास कम है तो समीक्षा करना मुश्किल है, ये समझ लेना चाहिए। जितना ज़्यादा डाटा हम कलेक्ट करेंगे उतना डाटा को हम समीक्षण में शामिल कर सकते हैं।
तो डाटा कलेक्शन के माध्यम से ये एनालिटिकल स्टडी ऑफ रिसर्च जो है उसको हम कर सकते हैं। तो डाटा जितने ज़्यादा हो, वो रिटिन हो, रिकॉर्डेड हो या इंटरनेट में हो, और रिसर्च पेपर की दृष्टि में हो या पुस्तक की दृष्टि में हो, और कहाँ रिव्यू निकला हुआ है, तो जिस तरह से हम ले सकते हैं, क्योंकि इतना डाटा हमारे इंडोलॉजिकल रिसर्च में भरा पड़ा है, तो हम सबको डाटा लेना चाहिए, जरूरी चाहिए। एक विषय में अगर हम प्रवेश करके उसको हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, ऐसे आगे बढ़ाने के लिए हमको बार बार लाइब्रेरी को जाना पड़ेगा, और लाइब्रेरी के साथ हमारा रिश्ता बहुत अच्छा होना चाहिए। जितना बड़ा लाइब्रेरी हो उतना आसान हो जाएगा हमारा कार्य। समीक्षात्मक अध्ययन के लिए हम पूर्व से अगर कुछ प्रसिद्ध ग्रंथ है उसको भी हम ले सकते हैं। वी कैन वेरीफाई द अर्लियर पब्लिश्ड रिसर्च डॉक्टरल थीसिस which are available already. सो उसमें हम कुछ नयापन लाएंगे या उसी को फिर दोहराएंगे। रिसर्च तो कभी नहीं बताता कि उसको फिर दोहराना हमको चाहिए। ऐसा नहीं है कि रिसर्च में पहले जो हो चुका है उसको हम दोहराएंगे। नवीन इसमें क्या है, नूतनत्व क्या है? नूतनत्वं तत्र अन्वेषितव्यम, किम नूतनम तत्र आवश्यकम अस्ति, अस्माभिः किम कर्तव्यम अस्ति, नूतनतया तत्र विषयस्य तत्र किम प्रयोजनम अस्ति, अस्माकं तत्र आवश्यकं तत् वयं पश्यामः। मम कृते किम नावीन्यं तत्र वर्तते। अतः नूतनत्वमेव गवेषणायाः तत्र मुख्य रूपेण तत्र विषयः कश्चन गवेषकः तत्र अन्विष्यति। नूतन किमपि प्रदर्शनं, नूतनं किमपि तत्र आवश्यकम् अस्ति। अतः एनालिटिकल स्टडी इत्युक्तौ तत्र बहवः तत्र विषयाः सन्निवेशिताः, यद्यपि तस्मिन् विषये पूर्वं यत् प्रस्तुतं तद्विषये संग्रहात्मकं पुनः अग्रे एव तद् अनुसृत्य वयं गच्छामः, संगृह्य एव अग्रे गच्छामः, तत् दृष्ट्वा एव अग्रे गच्छामः। तत् पुनः अस्माकं विषय एव उल्लिख्य अग्रे गच्छामः। कदाचित् छात्राः गवेषकाः तत्र न उल्लिखन्ति। पूर्वस्मिन् यत् प्रकाशितम् अस्ति, पूर्वेषु तत्र अस्मिन् विषये यत् यत् पूर्वं तत्र वर्तते, तत्र प्रकाशितम् अस्ति, पुस्तकरूपेण भवतु अथवा तत्र प्रबन्धरूपेण भवतु, गवेषणाप्रबन्धरूपेण कुत्र कुत्रापि तत्र वर्तन्ते, छात्राः न उल्लिख्यन्ते। तत्र छात्राभिः तत्र कदाचित् एवं क्रियते, ते तत्र अनुल्लिख्य एव अग्रे गच्छन्ति। छात्रैः सर्वं तत्र किं कुर्वन्ति, मम इति कृत्वा एव तत्र प्रदर्शयन्ति, परन्तु तत् न समीचीनं, गवेषणादृष्ट्या न समीचीनम्। अतः we have to see very scrupulously the earlier data available already for analytical study. Analytical study requires many collections. So again we have to organize those facts. Organization of the earlier facts, organization, you can say representation, then systematization, then ultimately analyze. So analysis requires these kind of fundamental things, that organization, representation, systematization. These three things are very essential for analytical study of research. Of course, these are essential for other types of research, but mostly when we take an analytical study, we require this very much. Next, we can go to another topic, just like method of research. That is, we can select a topic which can have the comparative approach also. So our research not only direct to one and only direction, but we can have another type of research, that is a comparative research. That is, comparison is necessary when we make some research topic, we select such research topic for comparative study. So those comparative study requires again and again, you can say, one author or many authors.
So one author, two author, or many authors. What we require from one tradition to the other tradition, within the tradition and tradition after, beyond the tradition, just like Nyaya tradition, Vyakarana tradition, Sankhya tradition, Mimamsa tradition, etc., etc. Any topic you take, whether we want to compare it within the tradition or beyond the tradition, that is your lookout. But you should keep in mind the time framework through which you can have your research. You can say, I have only 3 years in my hand. So if you select a topic and go for comparative analysis, comparative study, that comparative तुलनात्मकम् अध्ययनं, so शब्दशक्तिः विषये एव तुलनात्मकम् अध्ययनं मया क्रियते. अतः शब्दशक्तिविषये तुलनात्मकम् अध्ययनं यदा मया उच्यते तदानीमेव शब्दशक्तिविषये कुत्र कुत्र किं किं कृतमस्ति पूर्वं, किं किं दर्शितमस्ति, किं किं प्रकाशितमस्ति, तद्विषये एव अस्माकं तावत् उल्लेखनीयं भवति. इदानीमेव अस्माकं न्यायशास्त्रे शब्दशक्तिविषये ये तावत् प्रकाशिताः ग्रन्थाः सन्ति तदनुसारेण एव वयम् अग्रे गच्छामः. तत्र comparative outlook, comparative study within the tradition, that is I told you, within the tradition. But if you want to do it again beyond the tradition, so even though we are doing the work on Nyaya philosophy, but we have to go to again Mimamsa philosophy, because we require beyond the tradition also some references, some analysis we require beyond the tradition. So there is a comparison. What Purvapaksha says in Mimamsa on a particular topic, what the Uttarapaksha says in a topic in other tradition. For example, the Sabda Shakti itself, some say that it is Shakti, some say Lakshana is acceptable, some don't accept Vyanjana. But Alankarika accept Vyanjana. So why Vyanjana is not acceptable in Vyakarana? Why Vyanjana is not acceptable in Nyaya? Why Vyanjana is not acceptable in Mimamsa? So all these discussions have to be taken care of in a comparative manner. To what extent Nyaya philosophy accepts? To what extent the Mimamsa philosophy accepts? To what extent the Vyakarana accepts? To what extent the Alankarikas accept? So comparison is essential. When we take this comparative approach, Vishleshanatmakam, that is, you can say, the approach should be with reference to sadrusyam, किं सादृश्यम् अस्ति, किं सामान्यम् अस्ति, किम् असामान्यम् अस्ति, किं वैसादृश्यम् अस्ति, किं साम्यं, किं वैषम्यम् अस्ति. अतः साम्यं किं तत्त्वदृष्ट्या, वैषम्यं किं तत्त्वदृष्ट्या. तर्हि तत्र सादृश्यम् असादृश्यं यत् अस्ति तत् सर्वम् एव गृहीत्वा वयम् अग्रे गच्छामः. अत्र तावत् अस्य पद्धतेः तत्र गवेषणायाः तत्र छात्राणां कृते इदानीमेव अपेक्ष्यते. Comparative study is not much appreciated among the students nowadays. If you do the comparative study, you have to read many such texts before and also in between the tradition. What is there before the text you are undertaking for a study or a topic for the study, or if you select a topic which is beyond your topic, again you have to restrict your study. So the comparison between two thinkers, or you can say either with reference to their opinion to some specific point or meaning. So there should be a meeting point. There should be a point where you should have the meeting point or a point for discussion. If you have a parallel concept or a concept which is not equal to your concept, so that concept has to be very well defined in your topic of research. So that method you have to follow, a comparative method, comparative outlook you have to develop.
That is again the requirement of a researcher, which method you are taking while selecting a topic, whether it is analytical method or whether it is a comparative method. That method you should have to your choice, and some specific point of meeting you should have. Comparative aspect has to have some comparative outlook which have some meeting point. That meeting point of you can say follow to a particular text, or a comparison between two texts, or you can have one school, or you can have the parallel school in another tradition, and another school also. So different schools of thought, they have their analysis, and those analytical aspects, likewise a school, a system, or a tradition, whether it is parallel or it is same or it is different tradition. So while taking notice of these, we should have the points. Remember, in our time of research, that we should have the fair knowledge of the fields compared. With which school हम कंपेयर करना चाहते हैं, हम किस विषय पर कंपेयर करना चाहते हैं, जिस विषय से हम कंपेयर करना चाहते हैं वो सब्जेक्ट का हमारा ज्ञान जरूरी है, अच्छा सा ज्ञान हमको आना चाहिए, इसीलिए हम कंपेयर कर सकते हैं. अगर उसको कंपैरिजन करना चाहें तो वो दो स्कूल है या दो सिस्टम्स है और ट्रेडिशंस है, वो सिस्टम के साथ हमारा ज्ञान इतना होना चाहिए कि हम कंपैरेटिव एनालिसिस करने के लिए उसको हम हमारा योग्यता हो सके. इसीलिए हमको वो दो ट्रेडिशन को कंपैरिजन के लिए हमको पढ़ना पड़ेगा, और वी शुड हैव द क्वालिफिकेशन आल्सो टू अंडरटेक सच काइंड ऑफ रिसर्च, कंपैरेटिव रिसर्च. If you are unable to do this kind of research, one should not take such kind of research for PhD or for any project. So before selecting, going to the deep research, you must have to have this particular analysis in your mind, whether you are able to do this or not. You should with your guide, or you should discuss with your friend, the seniors, those who have already completed their PhD or research work, and again and again with your guide, you should discuss whether your comparative approach is perfectly fitting to your topic. If it is perfectly befitting, then only you can proceed further for a comparative work, samikhyatmakam adhyayanam. That samikhyatmakam adhyayanam is not only based on you can say analytical, but also here you are taking more than analytical, that is comparative. That comparative is tulanatmakam adhyayanam. So in analytical method, we did not have any comparison at that time. We did not have any kind of tulana or comparison. But here, beyond the analytical method we are undertaking of research, we are here in the second phase of our analytical is the first one, then second comparative. So we should have many aspects. If there are many topics which can be compared, then only you can take up that. But if it is not possible, then don't undertake such kind of comparative approach while doing the research. The choice is yours. It is again a method. It is again a type of research. Whether you are following analytical type of research, that is up to you. Whether you are following the comparative way of research, that is also up to you. Whether you are taking this type of research, whether it is comfortable for you, that is up to you. So you should have the field of knowledge of that particular subject of comparison. That is number one. Number two, you should have the comparison must have to follow a common basis. So that one should follow the common basis of comparison. On what basis you are comparing? That is the basic requirement of a comparative research.
what basis you have to follow in your research, and also you should have to carry out stage by stage in your analysis. That comparison has to follow step by step analysis. So that step by step analysis, if you are following, then this is also one kind of successful type of research one can undertake. If there are 10 people, 10 students in a department, all 10 students should not take up one type of research. They may take different types of research. What is important for them, what suits to them, what is befitting to them, they can have their selection of the topic, and this is the second type of research. Now the third one is critical type of research. So critical type of research is the third one that involves, you can say, careful analysis of the topic to review the facts and views established already before. So that analysis, careful analysis of the topic, you should review, and that review must have the facts of views already established. That is the critical analysis. This is a little bit higher, you can say. This is a little bit higher type of research. This is requiring a critical overestimation or critical estimation of the topic, the genuineness of the topic, the establishing the authenticity of the topic. That is the views and facts already established in the system and already established by the you can say predecessors. That is required by frequent examination, and examination in the sense of you can say frequent verifications of the data available to you. So data is frequently verifiable. If you collect the data and views, that collection of the data and views must be verifiable. And this verifiable data must have to be done not only by you but by anybody. You can verify, you can say, I have verified the data, but it must have the accuracy followed by you, the scientific temper of the research you should have. हम अगर इसे हम ये विषय को लेंगे तो हम क्रिटिकल जिसको कहते हैं, क्रिटिकल एनालिसिस जिसको कहते हैं, क्रिटिकल टाइप ऑफ रिसर्च जिसको कहते हैं, वो हम बार बार उसी को परीक्षण कर सकते हैं, डाटा को हम वो डाटा को वेरीफाई कर सकते हैं, लेकिन हमारे दृष्टि से तो वेरीफाई हो गया है, लेकिन और जो लोग देखेंगे उनके हिसाब से भी इसको वेरीफाइबल होना चाहिए. सो अपने आप को संतुष्ट करने के लिए हम गवेषणा करते नहीं है, पीएचडी करते नहीं है, प्रोजेक्ट नहीं करते. पीएचडी हम डिग्री के लिए सिर्फ कर देते हैं. पीएचडी हम डिग्री लेने के लिए, उपाधि ग्रहण करने के लिए हम कर लेते हैं, लेकिन पीएचडी लेने के लिए हमको एक जो प्रविधि है वो प्रविधि के अनुसार आपको जाना पड़ेगा. तो ये जो क्रिटिकल एनालिसिस, क्रिटिकल टाइप ऑफ रिसर्च वी शुड हैव, the critical type of research should have examination पुनः पुनः परीक्षणम. नामूलम लिख्यते किंचित नानपेक्षितम उच्यते, it is said. So नामूलम लिख्यते किंचित नानपेक्षितम उच्यते. We should follow the basis and foundation. You should go to the root of the problem. You should estimate critically and go seriously to the root of the problem. That is the requirement of critical analysis. If you are not going to the root of the problem, that is the foundation, then your research may not have that kind of appeal or may not have that kind of appreciation. Your research must have a critical appreciation. आजकल हम हमारे संस्कृत में तो एक
असुविधा है। हम जानते हैं कि जो समालोचनात्मक ग्रंथ, जो क्रिटिकल ग्रंथ जो होती है, क्रिटिसिज्म जो होती है, वो इसी में पड़ता है। वो क्रिटिसिज्म जो होता है इसी में पड़ता है। इसी हिसाब से उसको क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द फैक्ट बोला गया है, उसको कहा गया है। हमारा असुविधा ये है कि आजकल हम क्रिटिकल एनालिसिस नहीं करते हैं। हमारे गवेषणा में, रिसर्च में ये आजकल सबसे बड़ी दुख की विषय है। आप लोगों को मैं बताता हूँ, हम क्रिटिसिज्म सुनने के लिए तैयार नहीं है, हम क्रिटिसिज्म करना नहीं चाहते। अगर क्रिटिसिज्म किसी ने कर दिया तो हम उसके ऊपर गुस्सा कर देते हैं। ये सही दिशा नहीं है गवेषणा में। आप लोग सब लोग यंग विद्यार्थी हैं, जो भी यंग है या ओल्ड है, जो भी है, आप उसी में आपको ये मैं कहता हूँ कि आजकल एक धारा हमको देखने को मिलता है कि nobody is interested to listen to the criticism, which is very important for researcher. अगर किसी ने क्रिटिसिज्म कर दिया किसी को, तो हमें उसको हमेशा के लिए वो शत्रु बन जाता है उसका। ये बात नहीं है, ये गवेषणा में, रिसर्च में नहीं होता है। ये जब आप क्रिटिसिज्म सुनने के लिए तैयार नहीं हो, आप क्या कर चुके हो, आपके गवेषणा में, आपके रिसर्च में क्या कमी है और क्या अधिक होने चाहिए, अगर ये क्रिटिसिज्म सुनने के लिए आप तैयार नहीं हो, तो यू आर नॉट ए ट्रू रिसर्चर, मैं बोल सकता हूँ। और हम जितने भी हम देखते हैं आजकल हमारे चारों तरफ जो दिखते हैं, तो एवरीबॉडी इज इन ए रश। जल्दी जल्दी काम खत्म करके, जल्दी जल्दी हम पेपर तैयार करके, जल्दी जल्दी फिर हम उसको पेपर जहाँ पढ़ने जाते हैं, जल्दी जल्दी उसको निपटा के, उससे सर्टिफिकेट हासिल करके कैसे निकल जाएं, कैसे वहां से चले जाएंगे, ये हमारा काम है। बाकी क्रिटिसिज्म किसको सुनने के लिए जो अध्यक्ष बेचारा बैठा होगा, जो 4-5 लोग बैठे होंगे, अगर पेपर लेके उसको, जो पढ़ने वाले हैं उतना ही, जो पढ़ चुके हैं वो चले गए, पहले से चले जाते हैं। दिस इज नॉट ए गुड साइन। ये लक्षण शुभ नहीं है गवेषणा के लिए, रिसर्च के लिए ये शुभ लक्षण नहीं है। बच्चों को, जो विद्यार्थियों को ऐसा करना नहीं चाहिए। सबको सुनना है, ये एक विशेषता है। जो रिसर्चर है, जो गवेषक है, जो गवेषणा करता है, जो गवेषणा में रुचि रखता है और गवेषणा को जो जीवन में उसको उतारना चाहता है, उसको ये देखना चाहिए कि वी शुड हैव टू लिसन टू अदर्स, and listening part is very important. Those who are seniors, those who are professors, those who have little bit more experience than you, to those you are listening and you are obeying, because they can give you some direction. मार्गदर्शन करेगा कौन? जो डायरेक्शन तुमको देगा, आगे क्या रिसर्च हो सकता है, उसी को हम सुनना पड़ेगा और उसको बात को हमको ध्यान में सुन के आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन बच्चों में उतना नहीं है, धैर्य नहीं है आजकल कि उसको सुने और उसको सुन के और उसको अंत तक सुने और उससे क्रिटिसिज्म कुछ सुने, उसमें क्या खामियां है, व्हाट इज द डिफिकल्टी एंड व्हाट डू यू लैक इन योर रिसर्च। जो खामियां है हमारे रिसर्च में, गवेषणा में, हम उसको सुधारने के लिए बड़ों को सुनना पड़ेगा। बड़ों को हम जितना सुनेंगे उतना हमारा वो सुधारना हो सकता है, हम सुधार सकते हैं, हम उसको खामियां दूर कर सकते हैं। दैट इज, you have to again and again listen to the elders, listen to your teachers, listen to your guides, so that whatever is there, you have to remove all the obstacles from your mind. And that is how the critical approach, the criticism comes, and that is why we require the criticism. For example, उदाहरण स्वरूप रस सिद्धांत को हम लेंगे। रस सिद्धांत के ऊपर बहुत सारे किताब लिखी गई है। तो रस सिद्धांत जो है, अलंकार में जो दिया गया है, तो वाक्यम रसात्मकम काव्यम से लेके रस स्कूल जो है, जो ध्वनि स्कूल है, जो अलंकार स्कूल है, जो जो स्कूल उसमें हुआ है, सिद्धांत दिए गया है। तो रस में अभिनव गुप्त का क्या मत है, भट्टल लोट का क्या मत है,
ये जो सारे भट्ट शंकु को क्या है, श्री शंकु, ये जो सब मत दिए गए हैं, तो अभिनव गुप्त को पढ़ेंगे, लोचन टीका को पढ़ेंगे, बाकी सब टीका पढ़ेंगे, तो उसमें से आएगा। ये क्रिटिसिज्म है। टीका ग्रंथ हमारे संस्कृत में क्रिटिसिज्म कहा गया है, उसी को क्रिटिसिज्म कहते हैं। पुराने जमाने में वो क्रिटिसिज्म कहा गया था। हम आजकल जो बोलते हैं कि जो पहले जो लिख चुके हैं उसी के ऊपर उनका मत क्या रहा है, whether they accept the earlier views propounded by the predecessors or not, and what more they are telling after criticism. साहित्य दर्पण में हम क्रिटिसिज्म देखते हैं, जो टीका टिप्पणी लिखी गई है, साहित्य दर्पणकार भी मम्मट को क्रिटिसाइज करते हैं। ये ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? ये कारण दिया गया है जब काव्य लक्षण बोलते हैं। तो जो काव्य लक्षण बोलने के लिए उनको क्रिटिसिज्म वो करते हैं, बाकी लोगों को बाद में उसको मानना पड़ता है, क्योंकि उसमें तर्क दिया गया है। ये क्रिटिकल जो रिसर्च में सबसे बड़ी बात है, हम जो कहते हैं उसके साथ तर्क कितना हमारा जुड़ा हुआ है, कितना तर्क हम दे पाते हैं। व्हाट इज द लॉजिक वी आर गिविंग टू प्रूव आवर डॉक्ट्रिन और हाइपोथेसिस इन दिस क्रिटिकल एनालिसिस और पैरामीटर ऑफ रिसर्च। ये हमको देखना पड़ेगा कि हम कितने तर्क दिए हैं। व्हाट आर द वैलिड लॉजिकल ग्राउंड्स वी हैव प्रोवाइडेड while doing our research. Research is not a one day business or a 1 month business or 3 months or 1 year business. It is a lifelong business. Whether anybody has completed the research, okay, he has completed 3 years or 4 years or 2 years, like that, more than 4 years, 5 years. But there are something more to be done. अगर अपने रिसर्च जो टॉपिक को हम जब किए हैं उसको 10 साल के बाद, 20 साल के बाद, 25 साल के बाद अगर उसको फिर पढ़ेंगे तो हमारा खामियां उसमें दिखाई पड़ेगी। We can also know what we have missed out at the time of doing my research. इसीलिए हम जान सकते हैं कि ये हम करना चाहते थे लेकिन कर नहीं पाए, किसी कारण नहीं कर पाए, और नहीं तो भी हम समय के प्रावधान के हिसाब से हम उसको छू नहीं पाए, कर नहीं पाए। वी कुड हैव डन इट, हम कर सकते थे लेकिन हम कर नहीं पाए। अभी उसको मौका हमको मिलेगा, हम उसको कर सकते हैं। तो ये जो सुधारना होता है ये क्रिटिकल एनालिसिस और क्रिटिकल टाइप ऑफ रिसर्च में होता है, एंड वी हैव टू फॉलो। जैसे कि कहा गया है कि भारत में आर्य नहीं थे, वो विदेशियों ने लिख के गया है, और आज तक सब लोग रटते हैं वही है कि भारत में नहीं थे आर्य। आर्य लोग जो सब है वो बाहर से आए। लेकिन कोई विचार उसमें जो ठोस विचार दिया गया है, उस विचार को हम अगर देखेंगे तो वो विचार एकदम ठीक नहीं लगता हम लोगों को। तो विचार क्या है ना, बाहर से जो लोग आए हैं, क्योंकि भारत में सब अनार्य थे, यहाँ आर्य कोई नहीं था। अरे भाई, आर्य कोई नहीं था तो हम जो कर रहे हैं आज भारत में, और अगर विदेश से आए थे तो जहां से आए थे वो चीज होता है क्या वहां पर आज तक? ये एक बड़ा प्रश्न है हमारा, प्रश्न चिन्ह लग गया है। अगर हम रिसर्च की दृष्टि से उसको देखेंगे, आर्य भारत में नहीं है, ये वेद भारत में नहीं था, तो वेद भारत से बाहर से आए और आर्य लोग बाहर से आए। अगर इसी हिसाब से हम इसको सुनेंगे, इसी हिसाब से हम उसको, उनको जो दृष्टिकोण जो वैदेशिक तो हम मानेंगे, तो ये मानना पड़ेगा कि उन्होंने एकदर्शी होके इसको कहा है। इतिहासकारों ने एकदर्शी हो गए, तो एकदर्शी होके उन्होंने लिख दिए हैं ये सारे के सारे। तो बाहर से भारतीय लोग जो है, वेद के जानकार जो थे वो बाहर से आए, और यहाँ कोई आर्य नहीं था, ये सब अनार्य थे इसमें भारत में। अरे हम तो आर्य अनार्य के चक्कर में पड़ के तो अपना संस्कृति भूल गए हैं, और हमारा वेद को भूल गए हैं, और हमारा परंपरा को, संस्कृति को भूल गए हैं। उनको हम उत्तर दे सकते हैं थ्रू एनालिटिकल मेथड
एनालिटिकल मेथड ऑफ एनालिसिस रिसर्च करके बता सकते हैं कि हमारा जो भाषाएं हैं और इस भाषा में आर्य की जितने गंध है, जितना आर्य के जितना जो हम मानते हैं, जो हमारा पृष्ठभूमि, जो फाउंडेशन मानते हैं, वो फाउंडेशन है क्या नहीं उसमें, विदेश में वो है क्या। अगर ये उत्तर दे सकते हैं, विदेशी लोग दे सकते हैं, कहाँ है वो। अगर हम एक एग्जांपल देंगे कि रिचुअल्स जो है, जो सैक्रिफाइस है, जो यज्ञ परंपरा है, हमारा जो यज्ञ परंपरा है, अस्माकं यज्ञ परंपरा इदानीमपि वर्तते, तेषां इदानीं यज्ञ परंपरा अस्ति वा, जे तावत् ऐतिहासिकाः वैदेशिकाः गवेषकाः वदन्ति वेदः ततः एव आगतः, वैदिकाः एव ततः एव आगताः, आर्याणां देशः तु बहिः आसीत् एव, अत्र नासीत्, भारतीय नास्ति, भारते नासीत्। तेषां कृते उत्तरम् इदं भवति, इदानीमेव तत्र यज्ञ प्रथा वर्तते वा, यज्ञ विधयः प्रवर्तन्ते वा, तथा यज्ञे आद्यद्रव्याणि प्रयुज्यन्ते अस्माभिः इदानीं भारतीये, अस्माकं भारतवर्षे, तथा ते इदानीं किमपि तत्र कुर्वन्ति वा, यज्ञादि अनुष्ठानानि तेषां भवन्ति वा, संस्कारादीनि अस्माभिः यथा अस्माभिः क्रियते अत्र अस्माकम् अस्ति भारतवर्षे, तथा तेषां राज्ये एव, तेषां देशे एव इदानीं प्रवर्तते वा। मौलिकः प्रश्नः। अत्र एनालिसिस्, क्रिटिकल एनालिसिस् अत्र विद्यते, अत्र क्रिटिकल जजमेंट वर्तते, अत्र क्रिटिकल आउटलुक अस्ति, अत्र क्रिटिकल तत्र विचाराः प्रकट्यन्ते, प्रकाश्यन्ते। अत्र वयं तत् प्रकाशयितुमेव समर्थाः, अस्माकं देशे एव एतत् सर्वं तत्र प्रचलति, न तु विदेशे एव प्रचलति। अतः यज्ञविशेषाः राजसूय भवतु, वाजपेययज्ञ भवतु, दशपूर्णमासयज्ञ भवतु, यथा कथञ्चिदपि इदानीं होमयज्ञादि जानि कर्माणि अस्माभिः क्रियन्ते भारतवर्षे एव, अस्माकं तावत् उदाहरणत्वेन वयं दातुं समर्थाः, तस्मादेव आगताः इति। वेदेषु कुत्र कुत्र वर्तन्ते, ब्राह्मणग्रन्थेषु कुत्र कुत्र एतेषां निर्देशाः सन्ति। अतः दिशानिर्देशं तथा कर्तव्यं यथा मूलं गृहीत्वा एव, नामूलं लिख्यते किञ्चित् नानपक्षितम् उच्यते, पूर्वं मया उक्तम्। अतः मूलं गृहीत्वा एव अस्य विषयस्य पुनर्विचारः भवतु, तत्र पुनः भवतु, तत् निरीक्षणं तावत् अमूलं किमपि न भवतु, यथा आर्याः वैदेशिकाः इति अमूलकम् एतत्। अत्र गवेषणा दृष्ट्या एव एतत् अमूलकम् इति वयं वक्तुं समर्थाः। रामायणं इंडोनेशिया देशे आसीत् लेखनं, वाल्मीकिः तत्रत्यः एव। महाभारतः महाभारतं तु व्यासः तत्र इंडोनेशिया मध्ये एव लिखितम् आसीत्, अतः व्यासः न तु भारतीयः, वाल्मीकिः न भारतीयः। यदि कश्चन वदेत् एवं, तत्र तत्र गवेषणा प्रविधे मध्ये तत्र आवश्यकम् अस्ति, तत् मूलं किं, तत्र मूलं किं, कुत्र अस्ति, वाल्मीकेः जन्मस्थानं कुत्र, व्यासस्य जन्मस्थानं कुत्र, व्यासस्य वंशपरम्परा अस्ति वा, शिष्यपरम्परा अस्ति वा, कुत्र अस्ति, विदेशे अस्ति वा। वाल्मीकेः यावत् तत्त्वं तावत् रामायणस्य जानि जानि तत्त्वानि लिखितानि सन्ति, रामायणे पर्यवेशितानि तानि तत्त्वानि तस्मिन् देशे एव उपलब्धानि सन्ति वा। अतः मूलं दृष्ट्वा एव तत्र विचारः प्रकटयितुं वयं शक्नुमः, मूलविषये एव तत्र लिखितुं वयं शक्नुमः। किमपि मूलं त्यक्त्वा अमूलकं किमपि तत्र लिखित्वा एव यदि वयं अस्माकं गवेषणासन्दर्भं प्रस्तुतं कुर्मः, तर्हि तत्र हानिः एतादृशी भविष्यति, यतोहि अस्माकं तावत् मूलं किमपि नास्ति, तत्र विचारः न प्रकट्यते, मूलविचारः नास्ति एव। अतः मूलं लिखितुं तत्र आवश्यकतया तस्य डाटा यत् अस्ति तत् अवश्यं देयं। डाटा कलेक्शन is a part and vital part of research. That is why data collection must be completed before writing your topic of research. So you should have such data in your thesis that nobody can challenge what you are going to present in your thesis.
So every page must have some data. Every chapter must have some data. Every chapter should have some valid data which requires examination and confirmation. It should be examined, it should be confirmed. That confirmation data is very, very essential. This is one third type. So, samalochanam, criticism, and critical, you can say, writing of thesis, critical analysis of the thesis or the project or the topic. We can have the same also the historical aspect also. So historical aspect of the thesis also we can have the project also. Historical aspect is very, very important. Again, another type. So where we can have the history as the foundation of the topic of research. So in a historical type of research, basically that is based on records. So historical data basically refers to the records and documents already available to you. We can have the records from the archives, we can have the records from the museums, we can have the records from the historical books, archaeological sites, and field study report. So historical type of research, we require these four very essential. We cannot change the data in a historical fact as it is collected from the museum or archive, because archives have the records from many, many years and they have preserved it for us for analysis and for doing research. Suppose Rabindranath Tagore, the writings of Rabindranath Tagore, somebody is doing research on the writings of handwritten letters of Rabindranath Tagore. To whom he has written letters, what time he has written, on what date he has written, where he was at that time, whether he was in Bengal, where he was in, you can say, Odisha, where he was in Assam, where he was in Delhi, or he was in London, or he was in Indonesia, or Malaysia, or Japan. So from where he has written, so those records you will find it from the museums and archives basically, because they are protected documents. So historical type of research basically requires the documents which can be verified from the archives, museums, and record rooms of the government. So in each district, there is one record room in the culture department. So they keep the records of the ancient documents. So the reports are there, the gazetteers are there. So how many students refer to historical records, gazetteers, and archive items in Indological research? Hardly any student go on this kind of research. This field is totally neglected in Indological research. Nobody is taking care for doing this type of research because it is very difficult. It is very difficult in a sense that it requires more strength and more passion and more time to go to this museum and archives for collecting the data. But this is very important. You cannot change the fact. You cannot change the order of the sequence of the data. So data is fixed already. You have to analyze. You collect the data, analyze the data, go to the conclusion. And it is very, very important to synchronize. That synchronization of the data is very, very essential. The order of the data you have to put in such a manner that it requires a vision and it requires a particular direction to go for getting a definite conclusion. Any kind of, just one example I gave about Rabindranath Tagore. So also you can have many such records. Suppose you take the tradition of Ramayana, the dissemination of Ramayana or Mahabharata, you can have this. How the traveling of Mahabharata, traveling of Ramayana stories and the things
went from India to abroad, from Southeast Asia, from many other countries. So that is also again a historical type of research. So take a topic of Ramayana, or take a topic of Gita or Bhagavatam or any Purana. So that is very, very essential. So now we come to the conclusion of today's lecture. I hope you have enjoyed my lecture, and these are the basic facts of research, the types of research we are doing, and we will continue further. Thank you very much. We will meet again day after tomorrow. Any question you can ask? अगर तुम लोगों के पास कुछ प्रश्न हो तो इस तरह का एक हिमालयन पर्सनालिटी को तुम लोग प्रश्न कर सकते हो। कुछ अगर डाउट हो तो तुम लोग पूछ सकते हो। हाँ हाँ, यस, माइक्रोफोन इज हियर। सर एनालाइज जो डाटा हमको मिले हैं उसको एनालाइज तो करेंगे, लेकिन इंटरप्रिटेशन में कैसे करेंगे? ये सुबुन अच्छा, उसका बोलना हेलो अभी सुनाई पड़ रहा है भाई ना? ये साउंड हमें- बड़ा हाँ, उसका प्रश्न यही है कि हम लोग तो डाटा कलेक्शन कर लिए, लेकिन इन व्हाट वे विल यू इंटरप्रेट आवर डाटा? व्हाट इज द मैकेनिज्म, रियल मैकेनिज्म? व्हाट शुड बी द मैकेनिज्म? प्रश्न था। हाँ हाँ हाँ, data should be collected and the interpretation requires, you can say, all the types of methods what I said is differently attended. All the data must not have the same interpretation in all the methods, 4 methods I have told here. All the data must be kept into account in which method you are undertaking the research, in which types you are undertaking the research. The data should be collected keeping in view the method you are, the types of research you are following in your research topic. Same method cannot be followed one after the other in one topic. Number one. Number two, the data must be collected and sequentially presented in such a manner, alphabetically kept in the topic wise, in the point wise, in the historical perspective, means the time wise, author wise, commentator wise, and then the modern interpretation of a book and the article. So in these 5-6 ways, we can collect the data and arrange accordingly as per the data available to us, and we have to arrange it. The arrangement of the data is very, very essential. That requires more time. In first year, the students should collect the data and arrange accordingly. The time, then the sequence, the topic, the modern authors, the modern interpretations, the critiques, commentaries, and all this. So once you organize, it is very easy for you to go to the topic and give your conclusion. Okay, sir. Okay, sir. Thank you.